or not to be? That is the question. Humans have wrestled with this question for their entire life, concerning about their beings, their identity, and how we work. Today, however, a new question stands: to think or to let AI think for us. Welcome to today's podcast. I am Fajr Noor, and today we'll be discussing about artificial intelligence and its impact on our personal and professional lives. Today I have three guests with me, and I'd like to introduce my guests. First of all, I have Taba Khan, who is an economics major who deals with like how technology impacts the economy, the market. Then we have Alize, a computer science major who spends her days understanding the very technologies that power the AI systems we use. Last but not least, we have the woman who does it all. She creates content, creates music with her husband, and who owns a business that is of tattoos and somehow still manages to do economics with this. She's someone whose work has connected with the biggest names in economics field. Apart from this, legend has it she has even turned down an opportunity that many people love having. It wouldn't be wrong to call her the it girl for academics. The it girl. I'd like to welcome Miss Mariam to our podcast. Thank It's a you. pleasure to have you here. It's lovely to be here, Fajr. And you forgot to say that I also managed to show up to class on time. Yes, that you do. She shows up very punctually. Okay. Should we start? Yes, please, let's go. Let's dive into Okay. it. One of the most fascinating thing about AI is that we don't even know that it's around us before the topic of AI arose, globally. Whenever we wake up, we have alarm set up. We tell Siri to turn them off. Then we open our Instagram and then we're scrolling through it. And that is again algorithm suggesting us what we like. Then we're coming to university or going to the work, and we have Google Maps guiding us. Then when you go back home and you're chilling, you tell Spotify to play your favorite music or Netflix to play what you like. That again is recommended based on AI. So AI is very influential. When did you first realize that you were using AI without knowing? Hi, Fajr. Thank you for having me. I think you forgot to include a very significant part of my introduction, which is that I am the tail end of Gen X. And we call ourselves the greatest generation. Well, I mean, simply because I think we've seen the transition happen also. Because I remember the first time that I saw academic articles online during it was for my international economics. And otherwise, we would have to go to the library, we'd have to get them printed, and there was a limit to what you could get printed. So all of our friends would divide the book in three, and then we would try to smuggle them out. Sorry, am I supposed to say that? But then the access that you get to the internet. I think rather than saying AI, maybe we could just say access to internet was such a huge thing for us. And it's always been there, I believe. I don't remember that one moment where like, oh, things just, I feel like now more than ever, I'm thinking about something and it pops up. And so far, I don't mind it, Fajr, because it's making my life easier. I'm navigating my life around it. I thought that it was going to be much more complex. But maybe I am right now just a consumer and a user. I'm not thinking about the other implications, which maybe, the regulatory aspects of it. So Yeah, as a user, I'm quite happy thus yeah, far. it's true. Like whatever you want, you just say it goes to your phone, and the next thing it Actually, pops not up. just whatever you want, it's just a very intelligent assistant with you. And I do believe that human intelligence, there is no substitute for human intelligence. The more intelligent humans are, and the more aware humans are, and the more evolved and empathetic humans are, let's not take empathy out of it, the better AI will respond. We in assignments, as a teacher, I've struggled, I think maybe only for one semester, when I didn't know that, oh, this is a very good tool to have with us. Because teachers have complained about cheating and just simply copy pasting, and as a teacher I just had to come up with a better pedagogical navigation around this new tool that this technology has given to us. And I think you also know I make you do handwritten assignments.
and then there's vivas after that. So there is no substitute for actually not knowing the knowledge that you've been copy pasting, so to speak. So I do think that it is an incredible tool, but to be able to use it effectively, you need to have a grown up mindset, whether that's regulatory, whether that's coming through the academic system. I think everybody needs an overhaul. That's true. What's your take on this, Taba? Think that using AI and using it in a bad way is very opposite things. As ma'am said that AI is very helpful for me to do my research. और इसमें मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मैंने रिसर्च जो है वो AI से एक पेपर लिखा है बिल्कुल. I have asked AI to give me authentic and credible resources that I can really rely on, and on which many authors that are writing economic papers that have used them. And I think AI have really sorted things for me for writing a paper, not just cheating and copy pasting it. How so? Like you don't have to visit like millions of pages. Like you for writing a paper, you have to find credible articles, like authors that have written on your topic. AI just make a filter, like a coffee filter that filters the real extract of coffee. Just like that, AI filtered out many millions of articles for me and gave me like 10 to 20 articles that are really credible and that I can really use for my page. I think so that. I love that take. Okay, next question is, we see that, like with the rise of AI, a lot of people are talking to ChatGPT, be it, like health advice or their exam advice or general. They're trusting AI as a friend and seeking companionship. So, like, how do you think AI is changing communication today and relationships? You look at the evolution of man from caveman to communities, and then the evolution of language also. You will see that it has never been a constant. The only constant has been change, whether it has been in a certain dialect or whether it has been the entire language itself with the inclusion of words from other languages, and now with drawings. अब हम emojis की बात करते हैं. So, you know, Yes. we've seen pictorial images of man depicting on the cave walls. So it's the modern day, you know, cave drawing, and it encompasses drawing, encompasses the essence of something. So now, you know, if you're saying something to someone, you will either send a flower with it, or you send a smiley with it, or so just to kind of contextualize it. I think it is an evolutionary process, but I might just be very positive about it. I do believe that there is something to be said for face-to-face conversations, and I think your generation, Fajr, more than ever is now realizing it. I think in the middle there somewhere we got lost, but now you have all these cafes opening up where you just drop your phone. It's like technology-free zones, and you have to talk to each other. Even passwords are like talk to each other. Yeah. I think that is incredible because somewhere along the line, the generation, so human beings, I think थोड़ा सा credit कम दे रहे हैं हम इंसान को भी, क्योंकि इंसान को अपनी self preservation का पता है. उसको ये भी पता है कि अगर ये मैं करूँगा तो ये मैं, you know, so for example, you know, if you're taking advice from a bad therapist, let's just, you know, and not all therapists are created equal, and not all of them are going to give you functional advice. So if you're taking advice from a bad therapist, the same human, if they'd been going to a human therapist, would have been affected by that and would now continue to get affected by AI also. However, if again, थोड़ा सा मेरे अंदर एक हार्श इकोनॉमिस्ट भी बैठा हुआ है जिसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मे बी ह्यूमंस नीड टू बी स्मार्टर नाउ. दे जस्ट नीड टू नेविगेट दिस न्यू टूल दैट हैज़ कम टू अस. एंड ये एक बड़ी अच्छी मूवी है इंग्लिश की, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी. उसमें वो एक कोक की बोतल जो है ऊपर से गिर जाती है, एंड देन द, यू नो, इट्स इन द अफ्रीकन डेजर्ट. आई डोंट नो इफ यू गर्ल्स हैव सीन इट, बट यू शुड सी इट. एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, कि ये क्या है, व्हाट इज दिस. एंड देन ही इज, यू नो, the boy is going around from village to village checking if this is something that. So
this is a gift or a curse, or but I'd like to believe that this can be navigated around. My concerns for AI are wo dusre hain, when AI starts talking to each other and whatnot. But I would still say that there is certain. So I'm an active AI user, and my children are active AI users. But my daughter, who's a again the same demographic as you girls, she's very skeptical of some of the implications. Maybe मैं तो excited हुई हूँ because oh my god, I don't need to talk to a human, I don't need to converse with some. लेकिन the things like if I'm asking advice about something about my cat, it will come back to me and say, I'm not a vet, I'm not a qualified vet. You should consult a vet. And I appreciate that. And one of my sons, my younger sons, was doing something naughty. He said a naughty word for a 10-year-old or a 9-year-old. And AI immediately, because we're all linked together on the cloud, AI immediately responded to him, I don't want to talk about this. And if you want to talk about this movie that we were discussing, fine, but we will not be talking about this. So I think somewhere along the line, as it is progressing, regulations are coming up, and थोड़ा सा हमें इंसान को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा. So yeah, that. And by the way, to answer your question about when I think the first AI interaction was spell check. स्पेल चेक, इफ यू रिकॉल, तुम लोग तो फॉर ग्रांटेड लेते हो स्पेल चेक. हमारे लिए तो जब हम टाइप कर रहे थे, बिकॉज वी स्टार्टेड, माय फादर गॉट मी अ टाइपराइटर. The autocorrect you're referring to. Yes, sorry, yeah, spell check, autocorrect. So those are all, and then it gives you a thesaurus option. So हम वो वाली generation है जो कि thesaurus खरीद के घर में रखते थे. अभी भी मेरे पास 3 thesaurus पड़ी हैं. I don't know what to do with them. But when you look at, the autocorrect option, that was, it is telling you कि ये यहाँ ज़्यादा suitable है. उसको कैसे पता चला? And now giving you a full line. Yeah. Like, and then they literally suggest you the whole line. And sometimes मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि वाओ, इसको कैसे पता लगा मैंने ये कहना. लेकिन फिर भी मैं बताऊं, जब अभी सो फॉर एग्जांपल दिस अ होल थिंग अबाउट एआई टेकिंग ओवर लिंक्डइन प्रोफाइल्स, एंड सब इतना उसको फैंसी करके लिख रहे हैं, उसमें मीम्स भी बन रही हैं एंड व्हाट नॉट. जब आप इंटरव्यू में आते हैं तो आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन, आई कैन टेल इमीडिएटली एज एन एम्प्लॉयर, एज अ पोटेंशियल हायरर, I'm going to look at your profile, I'm going to look at you, I'm going to see whether there's 2 + 2 is matching or not. So ठीक है, ये बहुत ज़माने से हो रहा है. क्या पहले प्लेजरिज्म नहीं थी? क्या पहले नहीं था? वो डिफरेंट फॉर्म थी उसकी. अभी भी आपको काम कराना है ना, जिस इंसान से काम कराना है, जो कराना है, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसकी, अगर वो डेवलप नहीं हुई तो आई मीन मे बी आई एम बीइंग हाइपर पॉजिटिव. आई थिंक पहले प्लेजरिज्म होती थी बट वो पकड़ी नहीं जाती थी. नहीं, वो उसमें भी बहुत टूल्स थे, बट वो हर जमाने की एक रेगुलेटरी बॉडी के साथ आती जाती है. अभी मेरे ख्याल से चैलेंज रेगुलेशन का भी बढ़ गया. Yeah, exactly. How do you think universities should like bring I academic think we honesty? need an इस तरह? overhaul. We need to change. Faculty needs to change. How so? We need to understand that examination methods need to be reevaluated. Because now it's not about data regurgitation. You also, like you introduced me as this big economist, you asked me to compare Pakistan's GDP with India's GDP. I won't be able to compare numbers because for me, it is a number that I don't need to store in my database now. I can free up my RAM, my brain RAM. However, I can understand what the implications of this number are. कि why is it कि कोविड किस रीजन में ज़्यादा फैला, तो द वाई बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट नाउ. अब तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है एनालिसिस के लिए, क्योंकि नंबर तो सामने है. तो टीचर्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हमने एनालिसिस पे काम करना है. थोड़ा सा हमें सबको अनलर्न करना पड़ेगा और फिर ये चीज़ पे आना पड़ेगा. और फिर हमें, dare I say it, I don't know who's going to watch this, maybe education as we know it is going to be up on its head and it needs to be rethought. हम चाहते क्या है कि यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस है? हम थिंकर्स बनाना चाहते, हम सोशल साइंटिस्ट बनाना चाहते, या हम रिगर्जिटेटर्स बनाना चाहते हैं, जो कि एआई तो हम सबसे बहुत बेहतर कर सकता है. आई वंडर व्हाट द फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिटिक्स विल बी. A lot of jobs are going to get laid off. So you know what that gives opportunity to? More of this. Yes. Where human beings are making sense of, because जो मर्जी कह लो, जब तक मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड या मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे वैलिडेशन नहीं देते, it's still, we have to understand human beings are amazing and we still need human validation. But then we're so like overly dependent on AI for its opinion. Matlab, whenever you're writing, you do consider AI ka opinion कि if it's rightly written or correct the grammar or so. So there's like a lot of dependence
on that as well. So how do you think that impacts our critical thinking, हमारी creativity, I think the whole tool and the whole problem set solving? of critical thinking tools then needs to be reevaluated. Maybe मैं इसलिए भी हाइपर पॉजिटिव हूँ बिकॉज मुझे वैलिडेशन मिल जाती है एआई से, बिकॉज हमारी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, हमें हमें रगड़े वाली, हमने तख्ती पे भी लिखा हुआ है, हमें हमें पता है कि शेक्सपियर की क्या टोन है, हमें पता है अल्लामा इकबाल क्या सोच रहे थे, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था ना उस तरह से, और हमने फिर उसको पढ़ा भी था, हमने उसको रीड किया था, हमने उसको ये नहीं किया था कि अच्छा प्रॉम्प्ट डाल के निकाल लिया. तो शायद मेरे लिए वो एक एक्साइटिंग टाइम इसलिए बिकॉज इट गेट्स वैलिडेटेड from that, that, oh, this is what I was thinking already, and AI is reinforcing it. Your generation, someone needs to say, hang on, what can we do about this? So this is the responsibility is क्योंकि आपको मिल गई है ये चीज़, तो I think ये regulation भी आप लोगों में से ही आएगी. You like to add on it, Alize? The thing you said कि we want human relationships, that's like एक इंसान की ज़रूरत होती है. But the thing is कि अब हम जब आए हैं, we like started to getting know AI 3-4 साल पहले. But the newer generations, they highly depend on AI. For example, अगर अभी अपने AI ChatGPT और मे बी DeepSeek को कहूँगी कि टेल मी फैक्ट्स अबाउट माई सेल्फ, इट वुड नो स्टफ अबाउट मी दैट आई डिड नॉट इवन टेल. सो लाइक अब मैंने तो उससे बात कर ली, बट लाइक द न्यूअर जनरेशन्स दे काइंड ऑफ गेट स्केप्टिकल कि यार अगर मैं अपने दोस्त से बात करूँगा, व्हाट इफ़ ही जज मी. तो ही वुड प्रेफर गोइंग टू एन AI ओवर अ फ्रेंड. एंड दैट्स बिकॉज हमें आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन किया जा रहा है कि आपने कोई भी चीज़ करनी है, यू नीड टू लाइक हैव. देखो, जॉब डिस्क्रिप्शंस में भी पहले जो नहीं लिखा होता था, अब बड़ा बड़ा लिखा आता है कि आपको कर्सर, आपको AI ये यूज़ करना आना अब चाहिए. मैं तुम्हें ये देखो, मैं दिस इज व्हाट इज इनक्रेडिबल, द फैक्ट दैट यू आर सिटिंग हियर एंड यू आर ऑलरेडी टेलिंग मी ऑफ अ चैलेंज दैट यू विल फेस. दिस मीन्स दैट यू ऑलरेडी, देखो, द बिगेस्ट थिंग वन कैन डू इज आइडेंटिफाई द चैलेंज. जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मसला ये है, तो फिर आप मसले के सोल्यूशन पे आओगे ना. फिर तुम लोग अभी अगर जब डिग्री करके निकलोगे तो योर रिसर्च, इफ यू डिसाइड ओके आई वांट टू गो इनटू रिसर्च and you want to go into maybe you want to go into a PhD program where you have to come up with new knowledge. That new knowledge will be, how do we bring empathy back, how do we bring human relations back, how do we go back to the basics without going back to the stone ages. ये भी याद रखो कि अब अगर मेरे एल्गोरिदम को, मुझे एक आदत हो गई है कि मेरे एल्गोरिदम मुझे एक चीज़ फीड करेगा, एंड आई मीन people have used, I have friends who don't let me use their YouTube or their Spotify to search for songs because they don't want that algo to be messed up. Don't mess my algo up, there's like friends of those. वो Bluetooth का ही नहीं करते connect हमारे उसके ऑडियो के साथ. But having said that, ये बहुत बड़ी incredible चीज़ है कि तुम लोग अभी graduate भी नहीं किए हो, and you guys are sitting here and you're talking about regulation. You're talking about possible red flags. So you are aware, and again, it is not up to सारी information सब लोग एक तरह से नहीं process कर सकते. Human beings, much as we like to believe in economics that homogeneous, we're not homogeneous. We will have different competencies, and in that some people will appreciate empathy more, that this process needs empathy. अभी मेरे पास एक बच्चा आया counseling के लिए, wants to go into do a CA program, and my immediate response to his father was कि he's an artistic mind, and typically a CA program doesn't allow for that room जैसे economics के program में होगा. So make sure that empathetic angle. But then I was talking to हमारे CFO, FC के CFO से, and he was like, roles are changing. We are now becoming more like a CE. We are being trained to think like a CEO as opposed to a COO. So this understanding, you also have to understand, we aren't living in 1940 or the earlier time or before that. हम आगे आ गए हैं. अब उसमें किस तरह navigate करना है, वो रास्ता दिखाना सबका काम नहीं है. हर कोई लीडर नहीं होता. किसी एनिमल किंगडम के अंदर भी एक लीडर, तो इंसानों में भी this thought will come from people like you. I am absolutely, मतलब मैं बहुत ज़्यादा confident हूँ कि solutions भी तुम लोग ही दोगे. That's for sure, but then what if ये वाली same assistance is turning into dependence? What happens then? देखो, डिपेंडेंस इज ऑल अबाउट, अभी तुम लोग इतना सा चल के आए हो,
मेरी माँ जब यूनिवर्सिटी में थी, कराची यूनिवर्सिटी में, यू हैव टू गो सी हाउ ह्यूज इट इज़, देयर वाज नो कंप्लेंट्स ऑफ एसी एंड गाड़ी एंड दिस एंड दैट। हम हर चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब टेक्नोलॉजी आती है तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपने किसी जगह पे करना होता है तो फिर आप कर भी लेते हो। अगर आपको एक देखो, अगेन फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर अचीविंग एफिशिएंसी, यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ये एफिशिएंसी हम अचीव करके उसके साथ कर क्या रहे हैं। एक बड़े मज़े की किताब है, मैं वोंट गो इनटू डिटेल्स, बट वो ये एक्चुअली यही कहता है कि अगर हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते और हम लिफ्ट ले लेते हैं तो उससे जो हम टाइम, जब उससे हम टाइम को प्रोडक्टिवली किधर एंगेज कर रहे हैं। सो समटाइम्स येस, व्हाट फजर सेड इज़ राइट, वी डू नीड टू गो बैक टू सम बेसिक्स। हर चीज़ में हाइपर एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए, इसीलिए मे बी अर्बन सेंटर्स नीड टू बी सराउंडेड बाय सम रूरल सेंटर्स। हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें तो कॉन्स्टेंटली एक ओवरलैप ऑफ लाइफ, you know, so maybe, you know, we have FC की तो environment के अंदर we see कि okay, there's something as incredible as this media center, and then right next to it एक खेत उगा हुआ है जिधर आप पार्किंग स्पेस बना सकते हैं बट आप नहीं बना रहे। दिस रियलाइजेशन कि नहीं ये ज़रूरत है इस चीज़ की इज कमिंग फ्रॉम अ ह्यूमन। AI इज नॉट टेलिंग यू, वो तो AI तो अगर आप उसे कहेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ दिस स्पेस तो वो आपको यहाँ पे हाई राइज प्लाजाज दिखा देगा। ये तो इंसान ने डिसाइड करना है कि नहीं यहाँ हमें ग्रीन स्पेसेस चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल से कि पता नहीं, मैं हाइपर पॉजिटिव हूँ। That is why I cannot, like honestly replace humans ever. Humans with AI can replace. That is the I narrative think built. AI without human is आई डोंट नो nothing. रिप्लेस का क्या मतलब है, व्हाट डू यू थिंक रिप्लेस? I mean like this अब थेरेपिस्ट की जॉब्स होती हैं। आई थिंक थेरेपिस्ट जस्ट नीड टू गेट बेटर एट व्हाट दे आर डूइंग। I think there are platforms now. पहले ये होता था कि therapist would give you like assessment जो आप solve करते हो. Now it has integrated with AI कि आप AI पे अपना पहले test दोगे, that test then goes to the algorithm and then calculates score and then tells the therapist and connects you with the patients. So I think yes कि people need to get smarter as अच्छा, well. अगर यही जॉब्स ऑब्सोल्यूशन की बात है, एक ज़माने में एक चीज़ होती थी ब्लॉकबस्टर्स, और एक चीज़ होती थी जो एक मूवी वाले के पास आप जाते थे उसको कहते थे CD बर्न कर दो। वेयर इज दैट जॉब नाउ? Nowhere. नोवेयर। Nowhere. वी I डोंट think हैव हमें दैट। पता भी नहीं CD बर्न करना। CD बर्न क्या है एग्जैक्टली? लाइक CD बर्न कर दो। मिक्स टेप बना के देते थे किसी को, वो स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है ना तुम लोगों ने? Yes. दैट वाज आवर लाइफ। नाउ सो मेनी थिंग्स इन इट आर क्वेंट एंड यू नो एक्स्ट्रॉर्डनरी दैट वे कि वो दे आर सो विंटेज। बट द थिंग इज जॉब्स आर सपोज टू बिकम ऑब्सोलीट। वेयर इज द हॉर्स कार्ट ऑपरेटर, जो घोड़ा बग्गी चलाता था? Rarely. जब गाड़ी आई थी तब तो किसी को मसला नहीं हुआ था। Yes. सो टेक्नोलॉजी का फंक्शन ही ये है कि वो मार्क्सिस्ट उसमें भी कि इट विल कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड यू विल नीड टू। देखो अब क्या है, अब इट इज़ नो लॉन्गर अ वेरी पेट्रियार्कल सिस्टम। Having said that, the people in charge of this technology on top of the AI, that is something that sometimes scares me, but that we need more time for Fajr. बट अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें कि हमारी ज़िंदगियों में क्या बेहतरी आ सकती है, तो अगर हमें ह्यूमन वैलिडेशन नहीं खत्म होगी, मेरा अपना ये है, ह्यूमंस जस्ट नीड टू गेट बेटर एट व्हाट दे आर डूइंग। लुक एट यू गाइस, यू कम टू माय क्लास, देयर इज नो अटेंडेंस पॉलिसी, ऑल बिकॉज द वे दैट द असाइनमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड इज कि आपने रीडिंग शीडिंग ठीक है कर लिया, आपने कंपाइल कर लिया, लेकिन आगे जो एनालिसिस हम उसका करें वो तो हम अपनी लोकल कम्युनिटीज़ पे कर रहे हैं। अब अगर मुझे उस लोकल कम्युनिटी का डेटा पता चल जाए, मुझे उसका फैब्रिक पता चल जाए, वोंट आई बी एबल टू प्रिस्क्राइब द बेस्ट पॉलिसी फॉर इट? That's true. तो आपने आंख से देखा हो, you're better at analyzing it rather than आप दूर बैठ के देख रहे हो, then you can't figure it out कि क्या हो रहा है in actuality. AI, what it will do is, the advent of AI within education structures also is कि हम सबको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. I have to be Mariam Khalid, I don't know, 4.0 at this point. But it has to be that we are forced to keep up. And then we also understand कि हर generation का एक अपना wisdom knowledge set है. ठीक है ना, जो चीज़ तुम लोगों को आती है वो मुझे नहीं आती, लेकिन जो चीज़ मुझे आती है वो शायद तुम्हें अभी नहीं आती और शायद ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है ना। Having said that, there's no harm in understanding my husband has all these weird ideas about going back to the basics and post-apocalyptic world में survive कैसे करना है, आग कैसे जलानी है, how to survive a nuclear attack and what not. तो वो चीज़ें, वो तो फिर अगेन मैं उस्तादों पे कहूँगी कि उनका काम बनता है कि थोड़ा सा इसको I think we इंटरैक्टिव need to बनाए। learn the basics as well.
काफ़ी I लोगों agree. को तो I agree. I हाँ agree, हाँ and I recommended to Miss Cheryl Burke. I think she was before you guys were here on campus. कि हमारे general ed program में we should have things like tire change करना. Yeah, या especially for For girls. especially for Yeah, girls. So cars knowledge. by the way, जो तुम कहती हो ना AI will replace, and plumber की जॉब आज तक कोई है नहीं, इलेक्ट्रिशियन की जॉब बाजी है जी, छिपकली फंस गई है थे. अब वो छिपकली AI आइडेंटिफाई, हैविंग सेड दैट व्हाट AI डज इज सो इनक्रेडिबल दैट आप उसको एक दफा उसको कहीं से पता चल गया ना कि अब वो पॉसिबल सॉल्यूशंस में आपको बता देगा. इट इज लाइक, यू गाइस सीन गेम ऑफ थ्रोन्स? Some of Like, it. so basically there's a character Sam Tarly, he goes to वो जाता है Citadel. तो वो उसमें डिफरेंट जगह दिखाई हुई है ना. Citadel is this huge library and वो एक जगह ताला लगा हुआ है. वहाँ की किताबें जो हैं वो सिर्फ आप एक सर्टन प्रोफेसर लेवल पे आएंगे, तो मेस्टर बनेंगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं. और उसकी चाबी वो सैम को मिल जाती है. वो सारा दिन वहाँ जाके किताबें पढ़ता रहता है. AI आपको वो, इट्स डेमोक्रेटाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो. लाइक ठीक है, आई नो देयर पेड वर्जन्स, Yeah. बट अब अगर टिकटॉक की वीडियोस और अगर ये सब चीज़ें आपको ये बता सकती हैं कि मेरे निकाहनामे में हकूक क्या हैं, तो आपको फिर एक हैक लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जो आपके पैसे ज़ाया करा रहा है. एफिशिएंसी की बात ना करो मेरे से, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, इसलिए मुझे आई अंडरस्टैंड. ये मे बी दिस इज़ बेटर. ये जो बीच में सारे मिडल मैन बने हुए ना, क्योंकि देखो हर एफिशिएंसी, हर इक्विलिब्रियम से पहले एक बड़ा गंदा डिसइक्विलिब्रियम आता है. यस और इकोनॉमी में तो चेंज तो करज किया जाता है, लाइक इसको पसंद किया जाता है कि चेंज. कैपेसिटी, जी, कैपेसिटी. But then, जिस तरह पहले होता था that there'd be, like BBA students and then there'd be MBAs and jobs maybe होती MBA थी. needs to go. Maybe BBA needs to go. What is, so the thing is, these are all evolutionary processes, right, Yeah. Fajr? Maybe some degrees need to go. Do you think अभी भी ठीक है? So people are saying जी surgeons की job नहीं रहेंगी. But if a surgeon can extract, वो इतने मजे के robotic tools आ गए हैं, इतनी सी एक chip आ गई है जो अंदर जाके, तो वो ज़्यादा लोग it can cater to more people. Have you gone and seen the lines outside हमारे जो public hospitals हैं, Yeah. Yeah. government hospitals हैं? Yes. अगर उन सबका भला हो सकता है तो द ओनली प्रॉब्लम इज ऊपर रेगुलेशन में कौन बैठा हुआ है. इसलिए मुझे तुम लोगों के ऊपर, ये तुम लोगों पे है. कम इनटू पॉलिसी, go into policy, change things at the level where they need to be changed. Don't fight the technology, navigate it, mold it. आई थिंक नेविगेशन के लिए भी when they're like superior जो आपकी AI कंपनीज हैंडल करती हैं, they make it a very big profit. हम उनके लिए भाई product- तुम ये भूल रही हो कि सबने एक टाइम के बाद मरना भी है. Yes. So eventually the generation that is in charge of things with a certain mindset, I don't know if you saw my generation के लिए जो मैंने वीडियो भी की थी, उसमें वो खत्म होता जा रहा है. Eventually war will not look like, I don't know how long the war, this whole thing will start, a strategy and ये तुम लोगों की generation ने आके तो simple कहना है क्योंकि foreign policy should be whoever you're doing trade with, you should have cordial relations with. It should be as simple as that. And there should be no need for war and armies and whatnot. But maybe I'm being too dramatic right now and too radical. Lekin eventually, so if your generation is in charge, do you think they're going to want more war or they're going to want more sharing of the pie? More dialogue. More dialogue. More dialogue. Yeah. I think we're still sort of stuck at gatekeeping, but there is definitely a little sharing. But then again, it's the thing that we want the most authority. Everyone wants, I like the think best. if you understand power differently, power is access to knowledge. अब knowledge तो सबके पास ही आ गई एक तरह की. अब हमने power क्या है कि crowd को हम lead कर सकते हैं. तो वो चीज़ को navigate करने के लिए एक morality shift की भी ज़रूरत पड़ी हुई है कि what is the eventual goal? खुशी क्या है? Success क्या है? कितने मरले के कनाल के प्लॉट होंगे तो हम खुश होंगे, कितनी फॉरेक्स सेविंग्स होंगी तो हम खुश होंगे. इफ यू रीडिफाइन दैट, द इंडेक्स ऑफ वेल बीइंग, एज अमर्त्य सेन, तुम लोगों ने पढ़ा अमर्त्य सेन इन योर इकोनॉमिक्स? Yes. नहीं, यू स्टडीड अमर्त्य सेन. एज अमर्त्य सेन सेज कि भाई सब जो चीज़ उसको खुश करती है वो मुझे नहीं खुश करती, जो चीज़ से मेरा पेट भरता है उससे. दैट इज वाई देयर शुड नेवर बी हंगर इन द वर्ल्ड. We should never run out of supply.
ये तालीम बहुत ज़रूरी हुई है कि वेल बीइंग की डेफिनेशन कैसे चेंज करनी है. पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? पॉवर्टी की डेफिनेशन इज नॉट जस्ट इनकम पॉवर्टी, इट इज चॉइसेस पॉवर्टी. This is rich. You coming here to be able to record something, to be able to have a discourse without policing. This is you compare it to other academic centers and you'll think हम बहुत अमीर हैं. अमारत की डेफिनेशन जब चेंज हो जाएगी, सक्सेस की डेफिनेशन, और कौन करेगा? तुम लोगों को तो नहीं प्लॉट चाहिए. अगर चाहिए तो मेरे ख्याल से पूरी क्लास में एक सर्वे करके देखो. यू डोंट माइंड बिकॉज इट्स अ मींस टू एन एंड. इट्स नॉट जस्ट वेल्थ accumulation. Yeah. You want it because you would like to sell it and go to university or go travel the world. I think our generation is more just to kind of sukoon हाँ, वाली चीज. अब वो सुकून Not जो है, property and all that. नहीं, sukoon. प्रॉपर्टी इज अ मींस टू एन एंड. आई एम वेरी प्रो मनी. आई एम वेरी कैपिटलिस्टिक दैट वे कि भाई नहीं. बट हैविंग सेड दैट आई डू थिंक इट्स अ मींस टू एन एंड, क्योंकि पैसे गिनने तो नहीं है ना. तो जब वो अक्यूमुलेटिव एस्पेक्ट आपके अंदर से निकल जाएगा ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ओके, व्हाट डू आई वांट द कम्युनिटी अराउंड मी टू गेट बेटर. हाउ कैन वी यूज एआई टू मेक दिस कम्युनिटी बेटर? सिंपल. देयर इज योर आंसर. Now I'm going to show you images. We have a visual segment, and I want your take on these campaigns and images. So first of all, we have this campaign where I need to put my other where glasses they on. generated images, and all of the background that you see, that is AI generated. They're not in an actual, like Joyland sorts of park. So Even what is your take some on kind it? of clothes are also AI. Yeah, it was basically for their clothing shoot. So what's your take on it? I want like immediate answer, your first thought on it. I think it's very engaging. It's engaging. Yeah. What about you girls? I think it's unemployment for editors. Video. Yeah, somewhat. Yeah. Again, they need to like learn. Very visually pleasing. I also like Yeah. it. I think it's very well done. अच्छा, और बता. Then there was this model. Her name's Aisha. She had worked for Engine before, and then Engine used her face to generate a sort of campaign without asking her. Or they made like sort of pictures of They didn't her ask face. her? Yeah. No, ये that's इसकी रेगुलेशन की जरूरत है. देखो बेटा, जब सब कोई स्टार्ट होती है ना मार्केट में चीज, इट इवेंचुअली नीड्स रेगुलेशन. ठीक है, इट नीड्स रेगुलेशन. बट यू हैव द एफआईआर, यू हैव द, क्या है आपका वो जो साइबर क्राइम का पूरा Yeah, then she डिवीजन है. called them out Then she for called them. this. खत्म. Yes. The calling out is so incredible. You remember that movie स्टेप मॉम या स्टेप मदर करके उसका नाम था, जूलिया रॉबर्ट्स थी उसमें, जिसमें वो एक सीन है बड़ा फेमस सा है कि वो उसमें फूड का क्राफ्ट का एक आदमी होता है, and he's in his shorts and he's giving cheese की tray to the models and they're all looking at it, and then she just takes one or two pictures of that and then she photoshops और उसको सूट पहना देती है वो उसमें. वो उस जमाने का AI था. तो it has been going on for ages. We just need to understand the navigation around it. Yeah, what do you think? I think consent matters. चाहे Consent क्या है, matters. जितना भी आ जाए बंदगी. तो अब वो कंसेंट का देखो ना, अब आ गया कि आपने, you should have consent because this is a possibility. And lastly, Ghibli art. I don't know, I'm biased because But then people take years to just make, like one draft, and then there's AI in 30 seconds giving you one image. ये तो वही बात है कि फिर अगर एक ज़माने में ऑयल पेंट के कलर्स जो थे वो हाथ से बनते थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गए. जिसने, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं फजर, जिसने पुराने क्राफ्ट को अप्रिशिएट करना है ना, गिबली के भी जो थे, आई एम श्योर जो आर्टिस्ट हैं, दे गो बैक टू द बेसिक्स. दिस होल टेक्नोलॉजी वाज डिजाइंड बेस्ड ऑन द वे थिंग्स वर डन. As an artist, I paint like with acrylics, oil paints, but suddenly like I moved to digital animations, and like it took me 3 days, constantly like 3 hours every day to make a 10-second animation, 2D animation. Whereas in comparison, अगर आप वही चीज़ AI को दो तो वो शायद 5 सेकेंड में आपको जनरेट करके दे दे. बट लाइक एज यू सेड के आर्ट को अप्रिशिएट करने वाले लोग कभी ख़त्म नहीं होंगे. सो सम लाइक वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स. अगर आप ऑयल पेंटिंग बना रहे हो और AI भी वैसी जनरेट कर देगा तो पीपल कैन डिफरेंशिएट. समहाउ नहीं हो पाता, बट लाइक पीपल हु अप्रिशिएट आर्ट वुड प्रेफर कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ तो इट शुड नॉट बी AI जनरेटेड. एक और चीज़ भी है,
जितना ये AI आता जाएगा ना, उतना उस आर्टिस्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी जो बहुत अच्छा होगा। यस ये बड़े मजे का फिनोमेना हो गया है, वरना मुझे तो पुराना कोई आर्टिस्ट नहीं पता जो अपनी जिंदगी में इतना सक्सेसफुल हो जितना आजकल के यंगर आर्टिस्ट आर एबल टू सेल। दे आर हैविंग एग्जीबिशंस इंटरनेशनली because that particular genre gets celebrated even more because it's becoming unique. हमारे ज़माने में एक चीज़ आई थी, पोस्टर्स बनना शुरू हो गए थे आर्ट के, तो सबके घर में एक सादे कैन लगी हुई थी। तो अब हमने ये भी डिसाइड करना है कि डू वी वांट टू गेट कीप? Yeah. We Don't don't. we don't. Yeah. So if AI is allowing a certain, my issues would be copyright issues. My issues would be from the point of view of consent. वो रेगुलेशन में आएगा, वो पॉलिसी में आएगा, वो तुम लड़कियां बड़ी हो एंड गो इनटू इट, बिकॉज वी नीड मोर एम्पैथेटिक टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइंड ब्रेन्स इन पॉलिसी. Apparently, the originator of this Ghibli art, Miyakaze, is very against, this. He's like, this art has taken me years and AI ekdam se Fair, so- that's his Yeah. perspective, but it's a treat to watch. So, last question. What excites you the most about AI and what concerns you? This has been discussed in our discussion throughout. Now, I just want you to wrap it up. Okay, I will. What excites me is that I am able to consolidate what I already know, and AI is able to add to it, and it's a very efficient bridge between where I am and where I need to go. It allows me to have that access. What scares me is is an over dependence. Not by at a micro level, but I think at a level where we are underestimating the dangers, I don't know, the challenges of AI taking over. But मैं बहुत ostrich भी हूँ. I like to be in my bubble also. I'm very happy about AI's introduction into curriculum even. So I would like to stick with that and then hope that you girls will take over and fix all the problems. What about you? I think AI is a really good friend and a thing to use if we use it in a right way. And if AI is in right hands, it's safe. People are safe from it then. I think one major thing that excites me is healthcare, like getting advancements. आपके AI models would predict कि अच्छा ये आपको ये disease है, and like accurate ones. That kind of excites me क्योंकि पहले ये exist नहीं करता था. And about the concerns, I think critical thinking क्योंकि वही like as ma'am said कि we are too dependent. Obviously आप generation to generation हर किसी का different होता है. हमसे पहले generation किसी और चीज़ पे depend करती थी. Very We are good. depending on AI. But the bad part is कि we need to go to the basics. I loved your takes. So there's also, like how AI is helping so many sectors, even education in rural areas. I was having this Solia virtual exchange program, and they were telling me that how in areas where education is restricted, they're using AI to give them education. And I think that is wonderful. But then again, creativity is a concern because there's no mindstorming happening. It's like everyone's thinking the same. So there's how do you differ? That is a concern. What do you think? I agree. My 7-year-old asked me, Mama, what does artificial mean? And, he's a beautiful little soul, and, he always asks questions from his heart. And जब तक उसको reconcile नहीं होती सारी reality, he'll keep asking. So I said, where did you read it? Because then context आ जाता है. He said, artificial intelligence. And does that mean not real intelligence? Is it not real intelligence? Because the opposite of artificial is real. And I had to tell him, no, it could be that humans have made it, but it is still real. It is tangible. It is real, right? It is, so maybe it needs a renaming also. It needs a redefinition. And ये याद रखना है कि जब भी कोई आइडियाज़ आए हैं वो शुरू में बहुत रैडिकल रहे हैं और उनके फिर वो कैपिटलिज्म एज वी नो इट it has had a downfall, crisis after crisis, economic crashes and financial crises, and then there has been regulation that has been introduced. तो मैं फिर भी वही कहूँगी कि regulatory frameworks and maybe more empathy around AI, and that humans can give it.
Yeah, you summed it up beautifully. Thank you so much for showing up on time and for showing up, Everything you she's saying two that to girls. you. I loved all the insights, and what I'd say is that we don't need to be intelligent or AI to be intelligent. We should know how to guide AI. So that's all. Thank you. Human beings Bye. needs to be smarter. That's it. You just need to be Yes. smarter.